Hello students, today I am doing here the numericals based on Kohlrausch Law from the chapter Electrochemistry in class 12th. The conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 raised power minus 5 Siemens per centimeter. Calculate its dissociation constant if the molar conductivity at infinite dilution of acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मोलैरिटी गिवन है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001028 molar. This is the concentration. The conductivity means K is given to you 4.95 into 10 raised power minus 5 Siemens per centimeter. Calculate its dissociation constant if the lambda m naught at infinite dilution acetic acid is given to you 390.5 Siemens centimeter square per mole. तो स्टूडेंट्स पहले हमें इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट करनी है. इस कॉन्सेंट्रेशन पे हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. सो वी हैव टू प्लेस द फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी. के इज गिवन टू यू, दैट इज 4.95 into 10 raised power minus 5 into 1000. Molarity is 0.001028. So this one is conductivity. Conductivity in 2000 upon concentration, then you will get 48.15 Siemens centimeter square per mole. अब आपने इस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. आपको कॉन्सेंट्रेशन की आपने कैलकुलेट कर ली 48.5 एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 390.5. देन यू विल गेट 0.1233. that is your alpha degree of dissociation. Now we have to calculate the dissociation constant, that is K. K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. C is again 0.001028. Alpha we have already calculated 0.1233 square upon 1 minus 0.1233. So you can do the calculations by yourself, then you will get 1.78 into 10 raised power minus 5, that is dissociation constant. Students, इसके लिए हमने पहले मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करी है इस कॉन्सेंट्रेशन पे, फिर हमने अल्फा निकाला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा के बाद हमने निकाला है डिसोसिएशन कांस्टेंट. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. You are provided here with molar conductivity at infinite dilution of H plus ion and methanoate ion. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, C गिवन है, दैट इज 0.025 मोल मीथेनोइक एसिड. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी 46.1 Siemens centimeter square per mole. You have to calculate the degree of dissociation, that is alpha, and dissociation constant K. Same again. अब आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं है मोलर कंडक्टिविटी, तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मीथेनोइक एसिड की कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग HCOO माइनस एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, दैट इज गिवन टू यू 54.6 प्लस 349.6. ये आपके पास मीथेनोइक एसिड की गिवन है, ये आपके पास H प्लस आइन की गिवन है. आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट 404.2 Siemens centimeter square per mole.
Now put the formula for alpha. Alpha is equal to molar conductivity at particular concentration divided by molar conductivity at infinite dilution. Molar conductivity at particular concentration is given to you, that is 46.1, and we have already calculated at infinite dilution 404.2. You can do the division by yourself, then you will get 0.114. Now put the formula for dissociation constant. K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. C is concentration, that is 0.025, alpha 0.114, 1 minus 0.114. You put all the values in C alpha square upon 1 minus alpha, then you will get 3.67 into 10 raised power minus 4. That is dissociation constant K.